हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी क्वाइट वेल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो फार योर एग्जाम्स आर कंसर्न। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट अस मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटल्स की, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जी हाँ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। यहां पे आप याद रखिएगा, ये जो मेटल्स है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। वी कैन राइट द जनरल रिएक्शन, इट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन it gives metal oxide. These metal oxides, they are basic in nature. Rather, most of the metal oxides are basic in nature. So याद रखिएगा, metals react with oxygen and form metal oxides which are basic in nature. However, the reactivity of metals towards oxygen varies from metal to metal. Let us cite some examples. First of all, I will take the example of sodium. You know, sodium is highly reactive metal. Sodium is highly reactive metal and it vigorously reacts with oxygen and forms sodium oxide. This sodium oxide, it is basic in nature. So sodium reacts with oxygen and forms sodium oxide which is basic in nature. Since sodium is highly reactive metal, it easily catches fire if exposed to oxygen. That is why sodium is stored in kerosene. Now, how can we prove the basic nature of this sodium oxide? It's simple. We will treat this sodium oxide with water. When sodium oxide is treated with water, it forms an alkali, that is sodium hydroxide. You know, sodium hydroxide is a base, rather it is a water soluble base. So we can say that sodium oxide is basic in nature. You can balance the equation. It is 4 times sodium and twice sodium oxide. Another example of highly reactive metal is that of potassium. Potassium also reacts with oxygen vigorously and forms potassium oxide. This potassium oxide is also basic in nature. If you dissolve potassium oxide with water, it forms potassium oxide like this. It is potassium oxide. इसको हम ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, तो ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. Can you balance this equation? Yeah, you are right. Here it is 4 times potassium and twice potassium oxide. Now, after that, we will take another example as that of, we will take the example of magnesium. You know, magnesium is not reactive as, is not more reactive as compared to these sodium and potassium metals. So we can say magnesium is less reactive as compared to sodium and as compared to potassium. So magnesium does not react at room temperature. However, magnesium reacts on heating. When magnesium is heated in presence of oxygen, this means heat. When magnesium is heated in presence of oxygen, it burns with a dazzling flame and forms
magnesium oxide. This magnesium oxide is also basic in nature. How can you prove the basic nature of magnesium oxide? Yeah, it is simple. We will treat magnesium oxide with water. Definitely it will form magnesium hydroxide. Let me write the reaction. It is magnesium oxide plus water. It forms magnesium hydroxide. You know magnesium hydroxide is a base. So this proves that magnesium oxide is basic in nature. Now another example that will be important. Why? I will tell you later. We will take the example of aluminum. Aluminum is also less reactive as compared to these metals. So aluminum does not react at room temperature. However, aluminum reacts with oxygen on heating and forms aluminum oxide, Al2O3. This is aluminum oxide. Aluminum oxide is amphoteric in nature. अभी मैंने बताया था कि दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, वो इसीलिए क्योंकि अभी तक जो हमने मेटल्स देखे दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, लेकिन यहाँ पे जब हम अल्युमिनियम की बात करते हैं तो इट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सिंपल. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच आर बोथ acidic as well as basic. So those oxides which show both acidic character as well as basic character, they are called as amphoteric oxide, and aluminum oxide is one such example. Now the question is, how can we prove the amphoteric nature of aluminum oxide? It's simple. We will treat aluminum oxide with an acid and then with a base. In both cases, it will form a salt and water. And you know, when a base reacts with an acid, it forms salt and water. And simply when you can say when a base reacts with an acid, it forms salt and water. And when acid reacts with a base, it also forms salt and water. First of all, let us treat this aluminum oxide with an acid. Say for example, HCl, hydrochloric acid. When aluminum oxide is treated with hydrochloric acid, it forms salt, that is aluminum chloride, and water. Since aluminum oxide reacts with an acid and forms salt and water, therefore aluminum oxide is basic in nature. Now we will take this aluminum oxide and treat it with a base. Say for example, sodium hydroxide. When aluminum oxide is treated with sodium hydroxide, it forms salt, that is NaAlO2. So it forms NaAlO2. This is called as sodium aluminate. This salt is called as sodium aluminate, and it forms water. Since aluminum oxide reacts with a base and forms salt and water, therefore we say that aluminum oxide is acidic in nature. These two reactions show that aluminum oxide is amphoteric in nature. Here we are treating it with an acid, so it is a base, and here we are treating it with a base, that means it is an acid. Another example of a metal which forms amphoteric oxide is zinc. So zinc also forms an amphoteric oxide. You can find out its reaction yourselves. Now we will move towards the second property of metals that is important, that is reaction of metals with water. Reaction of metals with water. So reaction of metals with water, it is the second property of metals. यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है
metals react with water and form metal hydroxides or metal oxides. So there are two products may be formed, chances of two products. So we can write it like this: metal plus water gives metal hydroxide plus hydrogen gas. So this is the general reaction. When metals react with water, they form metal hydroxides plus hydrogen gas. यहाँ पे आपको जहन में रखना है, ये जो वाटर है, दिस इज लिक्विड वाटर, दिस इज लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. सो आपको याद रखना है, when metals react with liquid water, whether it is hot or cold, when metals react with liquid water, they form metal hydroxides with the liberation of hydrogen gas. Now यहाँ पे चूंकि मैंने अभी पहले कहा था कि metals react with water and form either metal hydroxides or metal oxides. If a metal reacts with steam, steam means gaseous form of water. So when a metal reacts with steam, it forms metal oxide. Plus hydrogen gas. तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है. If a metal reacts with liquid water, it forms metal hydroxide plus hydrogen gas. On the other hand, if a metal reacts with steam, that is gaseous form of water, it forms metal oxide plus hydrogen gas. Now let us cite some examples to make it clear. First of all, we will take the example of sodium. Why? Because sodium is highly reactive metal. You know, sodium reacts with cold water. So sodium plus water, H2O. But here we can write L. L stands for liquid form and it is cold. Since sodium is highly reactive metal, it reacts with cold water and forms sodium hydroxide, NaOH, plus hydrogen gas. So when sodium reacts with cold water, it forms sodium hydroxide and hydrogen gas. You can balance the equation. Here we can write twice, and it is twice water, and it forms twice sodium hydroxide and hydrogen gas. Another example of a metal which reacts with cold water is that of potassium. Potassium also reacts with cold water and forms potassium hydroxide with the liberation of hydrogen gas. So it will form KOH, that is potassium hydroxide plus hydrogen gas. Here you can balance twice potassium, twice water and twice potassium hydroxide. यहाँ पे भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो. अल्युमिनियम ऑक्साइड की जो एग्जाम्पल है उसको भी आप बैलेंस कर सकते हो. कैसे, जरा खुद गेस कीजिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे. या यू आर राइट. यहाँ पे वी विल टेक 6 times HCl. It will form twice. It will form twice aluminum chloride and 3 times water. So it is balanced now. It is balanced. Here you can take aluminum oxide. It is aluminum oxide. यहाँ पे हम twice लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये बनाएगा twice sodium aluminate and water. Now the reactions are balanced, I think. तो इसके बाद यहाँ पे अब सोडियम की बात की हमने, पोटेशियम की बात की. बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देयरफॉर दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर.
लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे भी आप मेंशन करो L, दैट इज लिक्विड फॉर्म। तो दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हम एक और मेटल की यहाँ पे बात करेंगे जो सोडियम और पोटेशियम से जो थोड़ा कम रिएक्टिव हो, तो उसमें आता है हमारा, उसमें आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे, लेट अस टर्न द पेज फर्स्ट। तो अभी हम किस मैग्नीशियम की बात करेंगे। ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। Magnesium does not react with cold water. However, magnesium reacts with hot water. Liquid form of water लेकिन hot, यानी we have to supply heat. तो when magnesium reacts with hot water, तो it forms magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide with the liberation of hydrogen gas. So this is the reaction of magnesium with, यहाँ पे हम इसमें L लिखेंगे, that is liquid form of water. तो ये जो सिंबल है, it means that we have to supply heat, यानी मैग्नीशियम जो है it reacts with hot water. However, मैग्नीशियम की एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जब ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट होता है, तो उस टाइम हम लिखेंगे H2O, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, G. G stands for gaseous state of water. So magnesium when steam के साथ जब ये रिएक्ट होता है, तो उस टाइम ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, with the liberation of hydrogen gas. So मैग्नीशियम दोनों रिएक्शंस दिखाता है। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, लिक्विड फॉर्म जो वाटर की होती है, तो उस टाइम ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज जो स्टीम जिसको हम कहते हैं, तो उस टाइम ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह अगर हम बात करेंगे अल्युमिनियम की, अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, लिक्विड वाटर, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट। ना ही अल्युमिनियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है। हाउएवर अल्युमिनियम जो है इट रिएक्ट्स विद स्टीम, दैट इज वाटर की जो गैसवस फॉर्म होती है उसके साथ ये रिएक्ट होता है, और उस टाइम ये बनाता है ऑक्साइड, दैट इज Al2O3 विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, वी विल टेक दिस अल्युमिनियम को हम ट्वाइस लेंगे, तो यहाँ पे जो वाटर है इसको हम 3 टाइम्स लेंगे, और ये बनाएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड with the liberation of 3 molecules of this hydrogen. So this was the reaction of metals towards with water. तो let us repeat. तो सबसे पहले हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। उसमें मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, एंड मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद हमने एग्जांपल ली, सबसे पहले हमने सोडियम की बात की। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. We can prove the basic nature of sodium oxide by treating it with water. When we treat this oxide with water, it forms sodium hydroxide. Sodium hydroxide, you know, it's a base. After that, we take the example of potassium. Potassium also reacts vigorously with oxygen and forms potassium oxide. Potassium oxide is also basic in nature. You can prove the basic nature of potassium oxide by simply dissolving potassium oxide in water. It forms potassium hydroxide. Potassium hydroxide is also a base. Rather, it is an alkali. Alkalis are water soluble bases. After that, we took the example of magnesium. Magnesium reacts on heating because magnesium is less reactive as compared to sodium and potassium. And when it reacts with oxygen on heating, it forms magnesium oxide. Magnesium oxide is also basic in nature. Magnesium oxide को हम जब डिजोल्व करते हैं वाटर के साथ, तो it forms magnesium hydroxide. So यहाँ पे magnesium hydroxide की जो फार्मूला है, it is MgOH whole twice. तो उसके बाद अल्युमिनियम की हम बात करेंगे. अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग,
तो यहाँ पे इसमें हम हीट ऐड करते हैं तो it forms aluminum oxide. Aluminum oxide is amphoteric in nature, that is it is both acidic as well as basic. How can we prove this? First of all, we will treat this aluminum oxide with an acid. It forms salt and water. It means that aluminum oxide is a base. After that, we will treat aluminum oxide with a base. It forms salt and water. It means that aluminum oxide is acidic. उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आई थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो उसमें हमको दो चीज़ याद रखने हैं. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, लिक्विड वाटर, वेदर हॉट और कोल्ड, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. On the other hand, if a metal reacts with steam, that is gaseous form of water, उस टाइम ये बनाता है मेटल ऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे सोडियम की बात की. सोडियम कोल्ड वाटर के साथ, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कोल्ड वाटर, और उस टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. उसके बाद हमने यहाँ पे मैग्नीशियम की बात की. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. It reacts with hot water and forms magnesium hydroxide with the liberation of hydrogen gas. And magnesium also reacts with gaseous form of water, that is steam, and it forms magnesium oxide and hydrogen gas. Aluminum is least reactive among these, so it also reacts with gaseous form of water, that is steam, and forms aluminum oxide with the liberation of hydrogen gas. These are the two main properties of metals. In the next video we will discuss the properties of metals, in which we are going to discuss the reaction of metals with salt solutions and reaction of metals with chlorine. एक तो हम सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ बात करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशंस. उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसी वीडियो में ये 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव ए नाइस टाइम अहेड. थैंक यू.